Very good evening to all of you. My name is E.R.T.J. Sultana, Director HR Quest. I am taking the class of your computer. We are giving coaching for banking, SSC, railway, OSSC, OSSC, including interview. Quest is one of the best institute in Bhubaneswar, and our students are getting through is that will be 50 to 60% of number of students giving exam. Our teaching pattern is something different. All teachers are from minimum 20 to 30 years of experience. And now I am going to start the question paper discussion of OSSC Junior Stenographer Clerk cum Librarian. Come to the question paper. This was the instruction given in your exam paper. This is your computer and internet awareness. Computer or internet awareness. Question number 125. A dash contains buttons and menu. A dash contains button and menu that provide quick access to commonly used command. Menu bar, toolbar, window, action bar. What is menu bar, what is toolbar, and what is window? आपण माने जदि कंप्यूटर को ऑन करूचंती जो स्क्वायर विंडो गोटे आसे ताकू कुआ हुए विंडो. दिस इज नोन एज विंडो. कंप्यूटर ओपन करने के बाद जो स्क्वायर एक बॉक्स आता है दैट इज नोन एज विंडो. व्हाट इज टूल बार? आपण माने जेतबले एमएस वर्ड रो पेज ओपन करूचंती फर्स्ट आपनकर फाइल रो ना जदि क्वेस्ट आसुची एठी लेखा आसीबो क्वेस्ट. This is known as title bar. Below the title bar, one bar is present, file, view, edit. All are written. That is known as menu bar. Below the menu bar, all tools are present, doing function on the word. आपण माने वर्ड उपरे काम करिबा पई सब प्रकार रो टूल्स एठी अवेलेबल अछि ताकू कोआ हुए टूल बार. This one is title bar. This one is toolbar. After toolbar, आपनकर गोटे छोटा scale आसे. That is known as ruler. This is known as ruler. Ruler तले लिखिबार एरिया स्टार्ट हो जाए ताकू कुआ जाए वर्क एरिया और वर्क स्पेस. वर्क एरिया और वर्क स्पेस. वर्क एरिया वर्क स्पेस पर गोटे पतला लंगर बार आसे सेठी आपनकर केते पेजेस अछि केते वर्ड अछि काउंटिंग हेकी लिखाई थाए. दैट इज नोन एज स्टेटस बार. That is known as status bar. Below the status bar, one bar is present, start button is will be there, date and time will there, and that is known as task bar. That is known as task bar. So the dash contains buttons menu that provide quickly access to commonly used command. ऐसी सब tool bar रे menu bar रे total टाकू हमें मिसे कि tool bar कही परिबा. The answer is your tool bar. Which type of file is created by word processing program? आमे जेतेबळे word processing program को use करू, whenever we can use word processing program, at that time the file will be created that is known as docx. Docx मतलब that is a document file. .docx. Suppose file name is quest. Quest.docx. docx your extension. Kahara extension that is the word file thibo word file ro extension .docx. Jadi apanଙ୍କର worksheet file अछि, worksheet file is nothing but your excel file .xlsx. Jadi file na rahila quest1 then ye file hobo quest1.xlsx. Storage file jodi apanଙ୍କର data jodi store hochi that is known as storage file.
ताहले डेटाबेस रे डेटा रखिबा को को हुए डेटाबेस फाइल what type of file created by word processing ms word रे आमे जदी करूचे ताहले हमरो document file .docx मतलब document file तैयारी हबो that is your document file. Which of the following menu types also called drop down menu? Drop down menu कहा को कहिबा सेते बळे आपण माने गोटे फॉर्म आपणकर पकोचंती सपोज गोटे बॉक्स रहुची एठी गोटे छोटो एरो रहुची ए एरो को क्लिक कले जदि डिस्ट्रिक्ट रहुची भुवनेश्वर केंद्रापड़ा बालेश्वर और डिस्ट्रिक्ट शो करूचंती याको क्लिक कले जो ड्रॉप है कि सब शो करूची ताको को हुए ड्रॉप डाउन मेन्यू और दैट इज अदरवाइज नोन एज पुल डाउन मेन्यू that is already known as pull down menu. Answer is pull down menu. Cascading मतलब one after another रहिबा को cascading कुहा जाए. What is pop-up? आपण मानक मुंदरे चिंता आसुथवा pop-up कोन pop-up रो माने होची किछि सपोज आपण फाइल ओपन करे फाइल ओपन कला बळे सब ओपन फाइल सेव as जो ड्रॉप है कि सब आसिला that is known as pop-up. Pop-up मतलब suppose आपण MS Word रो गोटे पेज ओपन करि जंती आपण सेव करि नांती आपण क्रॉस करि देले ऑफ करिवा पई इमीडिएटली गोटे बॉक्स आसी जाय डू यू वांट टू सेव yes or no, that is known as pop-up. Computer manipulates data in many ways and that this manipulation is called utilizing, batching, upgrading, processing. आमे कंप्यूटर को किछि इनपुट दोके whatever we can give the input, after giving the input that will be processed and we can get the result, and that is known as processing. Processing is nothing but your manipulation that is known as processing. आमे कंप्यूटर को किछि इनपुट दवा internally that will be processed and we can get the result, that is known as processing. The processing is known as what manipulates data in many ways and the manipulation is known as what processing. What is utilizing? Utilizing माने होची आपण माने किछि जिंस को यूज करी किछि आपण बेनिफिट पाउचंदी, that is known as utilization. एग्जांपल आपण मार्केट रो गोटे बुक आनिले बुक को पढिलेनी 2 इयर्स रखिले देन आफ्टर से अपरे धुली एते मोटर बसी गला देन आपण ताकू थ्रो आउट कर देले, that is not utilizing. ताकू आनिले किछि पढिले आपनकर किछि बेनिफिट हैला, that is known as utilization. Batching that is series of execution is known as batching. 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 Upgrading मतलब advanced version. आपण माने करो विंडोज 8 यूज करूथिले वर्तमान विंडोज SQL 2000 यूज कले कि वर्तमान विंडोज 10 यूज करूचंती, that is the advanced version you are using, that is known as upgrading. And आमे कंप्यूटर को किछि इनपुट दवा that will be processed and we can get the result, that is known as processing. Answer is processing. Programs such as Internet Explorer that serves as navigable window into a web is called hypertext network internet web browser. What is the meaning of hypertext? Hypertext ame kahaku kahiba. Hypertext ame kahaku kahiba. Suppose ame gote tiyari kariche web pages, सेथिरे गोटे रहिची join बोली, join click करेला परे गोटे immediately गोटे form आसी जिवो, that means एठी किछि link अछि, that is known as hyperlink. That is known as hyperlink. आउ जते बळे link गोटे text को दिया हेतिबो, that is known as hypertext. Network, what is known as network? Number of computers are connected together for the purpose of communication is known as networking. Number of computers are connected together for the purpose of communication is known as networking. सबुठु बड़ नेटवर्क is होची तमरा इंटरनेट, सबुठु big network होची इंटरनेट. The program such as Internet Explorer that serves as navigating window into a web is called, that is known as a web browser. आमे किछि जेटी नेट सर्फिंग करूचे कहा द्वारा करूचे, ब्राउजर थ्रू रे करूचे.
what is known as web browser ये कहि परिबा what is web browser होची what is that web browser suppose आपण जेतेबेले आपणकर कोविड हेइतला आपण माने घरे रही के कोन करूथले ना कि मटन बिरयानी चिकन 65 मटन रोगन मसाला कोन कोन रांधुथले तो आपण कोठी सर्च करथले गूगल रे जाई के सर्च करथले गूगल रे जेतेबेले आपण सर्च करथले प्रिपरेशन ऑफ बिरयानी इमिडिएटली बिरयानी रा को जोठी भी फाइल थिबो से तबु सर्च करी आपण को देई दोथला तो सेटा कोन ना ऑलरेडी गोटे सर्वर अछि सेटिरे ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव स्टोर्ड दैट इज नोन एज वेब सर्वर तो आमे ब्राउजर थ्रू रे वेब रे जहां भी अछि आमे ताको सर्च करि पारुजे the programs such as internet explorer such as navigable window into a web are called that is known as web browser basic operation performed by computer is known as computer रे आमे कोन करूचे addition subtraction multiplication division storage everything we are doing that means first one is arithmetic operation le mane hochi addition subtraction multiplication division logical operation greater than smaller than equal to logical operation storage that means ame computer re sabbu काम करि परजे addition subtraction multiplication that is arithmetic operation logical operation storage and relative answer is all of the above. What time is the main difference between mainframe computer and supercomputer? According to size, computer are 4 types: mini computer, microcomputer, mainframe computer, and supercomputer. According to size, computer is 4 types: mini computer, microcomputer, mainframe computer, supercomputer. Computer is categorized as 3 types. 3 प्रकार रा computers अछंती. According to size, according to work, according to purposes. According to size, according to work, and according to purposes. According to size होचंती 4 प्रकार. That is mini, micro, mainframe, super. According to work होची 3 प्रकार computer: analog computer, digital computer, hybrid computer. Analog computer, digital computer, and hybrid computer. According to purposes होची 2 प्रकार: general purpose computer, another one is special type of computers or special purpose computer. One is general purpose, another is special purpose. First one is according to size hela mini computer, microcomputer, mainframe computer, supercomputer. Mini computer वर्तमान टाइम रे किछि यूज ना जदि भी यूज होजी एज ए मिड रेंज सर्वर. आप लोग जब कंप्यूटर यूज करते हो अभी मिनी कंप्यूटर का कुछ यूजेस नहीं है. जब भी मिनी कंप्यूटर को यूज करते हैं एज ए मिड रेंज सर्वर. माइक्रो कंप्यूटर होता है दैट इज डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फोन, पेजर. फर्स्टेस्ट एक लाइन में बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज फर्स्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर इज योर माइक्रो कंप्यूटर. मेन फ्रेम सबसे हमारा दैट इज नोन एज हार्ट ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड और बैकबोन ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड. मेन फ्रेम कंप्यूटर इज नोन एज हार्ट ऑफ द कंप्यूटर और बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर. एंड सुपर कंप्यूटर उसको हमारे दैट इज सबसे फर्स्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड दैट इज नोन एज सुपर कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर का अभी यूज नहीं है. माइक्रो कंप्यूटर होता है डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फोन, पेजर. ऑल फर्स्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर इज अंडर योर माइक्रो. मेन फ्रेम कंप्यूटर को हार्ट ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड और बैकबोन ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड बोला जाता है.
एंड सुपर कंप्यूटर उसको बिजनेस में यूज करते हैं मेन फ्रेम. अनदर थिंग इज दैट व्हाई मेन फ्रेम इज कॉल्ड मेन फ्रेम, दैट कंप्यूटर इज माउंटेड इन ए फ्रेम, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज मेन फ्रेम. सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज सुपर कंप्यूटर. And according to work, 3 types: analog computer, digital computer and hybrid computer. Analog computer किसको बोलेंगे? जिसमें हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज हम लोग मेजर करते हैं, दैट इज अंडर योर एनालॉग कंप्यूटर. डिजिटल कंप्यूटर अभी जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हमारा यूज करते हैं 0 and 1, दैट इज योर डिजिटल कंप्यूटर. हाइब्रिड, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, दैट इज अ हाइब्रिड. एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर, आप लोग एवरीडे जाते हो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने के लिए. पेट्रोल पंप में आप लोग डालते हो तो प्रेशर से ऑयल जाता है एंड सो कितना रुपीस एंड कितना लीटर दिए वो शो करता है डिजिट में. द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, दैट इज ए हाइब्रिड कंप्यूटर. एंड अकॉर्डिंग टू पर्पसेस 2 types, one is general purpose computer, another one is special purpose computer. General purpose computer hardware will be there, software designed by the user, we can install the software, we can work on it, that is known as general purpose. Generally हमारे पास हार्डवेयर अवेलेबल है, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करते हैं, काम करते हैं. एग्जांपल, जो लैपटॉप हम लोग एजुकेशन में यूज करते हैं उसमें हम लोग .NET, जावा, ओरेकल, हमको जो चाहिए हम लोग लोड करते हैं. सेम थिंग जब एक बैंक में कंप्यूटर यूज होता है, बैंक का सॉफ्टवेयर उसमें लोड होता है. एक सपोज एक स्टॉक एक्सचेंज वाले यूज करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो यूज करते हैं, उसको हम लोग डालते हैं. तो एग्जैक्टली लाइक दैट ऑलरेडी हार्डवेयर अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर डिजाइन बाय द यूजर, वी कैन इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, वी कैन वर्क ऑन इट, इसलिए उसको बोला जाता है जनरल पर्पस कंप्यूटर. जनरली हार्डवेयर आर प्रेजेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर एंड वर्क ऑन इट, दैट इज नोन एज जनरल पर्पस कंप्यूटर. अनदर वन इज स्पेशल पर्पस, दैट इज पर्टिकुलर फॉर द पर्टिकुलर पर्पसेस, एक डेडिकेटेड फॉर द सिंगल वर्क. एग्जाम्पल, आप जाओगे पैसे उठाने के लिए एटीएम मशीन में, आप जब पैसे उठाते हो, जो इसमें आप डिपॉजिट करते हो और विड्रॉ करते हो, उसमें आपका पासबुक प्रिंट नहीं होता है. पासबुक प्रिंट करने के लिए अलग मशीन होता है. दैट मीन्स दैट इज पर्टिकुलर फॉर द पर्टिकुलर पर्पसेस. आप जब गए जाते हो पैसे उठाने के लिए, क्या बिफोर दैट आप इंस्टॉल करते हो सॉफ्टवेयर, उसके बाद पैसे उठाते हो? नो, ऑलरेडी आपका सॉफ्टवेयर लोड है फ्रॉम द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. स्पेशल पर्पस में क्या होता है ना, प्रोग्राम लोड रहता है फ्रॉम द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और दैट इज स्पेसिफाइड फॉर द स्पेसिफाइड वर्क. एक सिंगल वर्क के लिए वो स्पेसिफाइड रहता है, दैट इज नोन एज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. तो हमारा क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन a mainframe computer and supercomputer? What is the main difference? Option is C. Supercomputer are focused to execute few programs are they fast as possible, while mainframe use power to execute as many programs concurrently. What is the meaning of that? Supercomputers are focused to execute few programs. Supercomputer में क्या होता है ना, वेदर फोरकास्टिंग होता है, तो इसमें स्पेसिफाइड वर्क होता है. बट इन केस ऑफ मेनफ्रेम हम लोग यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस. इसमें क्या होता है, मेनफ्रेम को क्यों हार्ट ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड, हार्ट ऑफ द और बैकबोन ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड बोला जाता है? उसका मेन क्राइटेरिया होता है मेनफ्रेम एज ए सर्वर, वी कैन कनेक्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर, लेट्स से 1000. 1000 एक सर्वर में 1000 कंप्यूटर लगाते हैं, मतलब 1000 नंबर ऑफ यूजर्स विल बी देयर टू वर्क ऑन इट. दैट मीन्स इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, ऑन ए सिंगल टाइम, ऑन ए सिंगल डेटा, नंबर ऑफ यूजर्स आर वर्क टुगेदर. सपोज मैं एक LIC की पॉलिसी होल्डर हूं, मेरे LIC की पॉलिसी के ऊपर 1000 लोग काम कर पाएंगे. दैट मीन्स कोई इंसर्ट करेगा, कोई डिलीट करेगा, कुछ अपडेट करेगा, मगर जिस वक्त जो भी सबमिट लगाएगा, सबका सबमिट एक्सेप्ट करने का क्षमता किसके पास है? तुम्हारा मेन फ्रेम कंप्यूटर के पास है. दैट मीन्स as fast as while mainframe uses power to execute many programs concurrently, at a time उसमें many works, many programs हम रन कर पाते हैं. That's why answer is C. The brain of the any computer is known as, brain of the computer is CPU. ALU arithmetic and logic unit. हमारा CPU 3 सेक्शन को लेके होता है, ALU,
कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ये तीनों को कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म आवर सीपीयू। सीपीयू होता है एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। The brain of the computer is ALU. Answer, brain of the computer is your CPU. ALU, arithmetic logic unit. This one is memory unit, CPU and control unit. CPU, brain of the computer, किसको भी बोला जाता है? Answer is CPU. The two kind of main memory are primary and secondary, random and sequential, ROM and RAM, all of them. Basically, memory is two types. One is primary memory. Another one is secondary memory. Depending upon the storing, memory is two types. One is primary memory, another one is secondary memory. Okay, so two kinds of memory are there. इसमें पूछा गया है two kinds of memory are there for computer. कंप्यूटर में two types के memory रहते हैं. One is ROM, another one is RAM. Random access memory, read only memory. Answer is 2. But basically memory is two types. One is primary memory, another one is secondary memory. Memory, primary memory हो जाता है volatile memory, volatile, non-volatile, cache. Volatile मतलब सप्लाई है, कंप्यूटर ऑन है, डेटा विल बी प्रेजेंट, सप्लाई कट ऑफ, कंप्यूटर शट डाउन, डेटा इज लॉस्ट, दैट इज नोन एज वोलाटाइल। वोलाटाइल के अंदर आप लोग का आता है रैम। एंड नॉन वोलाटाइल, सप्लाई रहे अप्लाई नहीं रहे डेटा रहेगा, दैट इज योर रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है फ्रॉम द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज सॉफ्टवेयर का नाम होता है बायस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर का बेसिक रिक्वायरमेंट कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले स्क्रीन, डिवाइस ड्राइवर, इन लोग का इंस्ट्रक्शन किसमें है? रोम में है, दैट इज फ्रॉम द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? जो मेमोरी हम लोग अपने डेटा को काफी देर तक सेव करके रखते हैं। किसमें रखते हैं? हार्ड डिस्क। किसमें रखते हैं? पेन ड्राइव। किसमें रखते हैं? सीडी रोम। तो हम फ्लॉपी डिस्क, दीज आर योर सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें हम लोग अपना डेटा को काफी देर तक, काफी टाइम तक सेव करके रखते हैं फॉर आवर पर्सनल यूज, दैट इज नोन एज योर सेकेंडरी मेमोरी। द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर, तो हमारा दो टाइप का है, वन इज रोम, अनदर वन इज रैम। नेक्स्ट, which of the following is designed to control the operation of the computer? Which of the following is designed to control the operation of the computer? User, application software, system software, utility software. Answer is your system software. Answer is your system software. देखते हैं क्या system software है? The software which will useful for the system. The software which will useful for the system. The software which will useful for the system is known as system software. The software which will useful for the user, that is known as application software. The which of the following designed to control the operation of the computer? कंप्यूटर को सारा ऑपरेशन को कौन कंट्रोल करता है? Your operating system. Operating system is a system software. Answer is system software. What is utility software? Anything you have utilized and you are get benefited, that is known as utilization. कंप्यूटर किसको यूज करके क्या बेनिफिट पाता है? नंबर ऑफ utility software will be there. I am giving one example, that is antivirus. Antivirus को यूज करके कंप्यूटर अपने को प्रोटेक्ट करता है from the viruses. Antiviruses is under your utility software. CD-ROM is a second semiconductor memory, memory register, magnetic memory, none of the above. CD-ROM आंसर इसमें होगा none of the above. सेमीकंडक्टर मेमोरी किसको बोला जाता है? सेमीकंडक्टर मतलब that is lies between conductor and insulator.
lies between conductivity is lies between conductivity lies between conductor and insulator is known as semiconductor. Next one, 136. Which of the following is not an input device? OCR, optical scanner, voice recognition system, COM, output to microfilm. Which is not a input device? Input device किसको बोला जाता है? Output device किसको बोला जाता है? The devices through which we can give input to the computer is known as input devices. The devices through which we can get the output is known as output device. OCR is the input device. Optical scanner is our input device. वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है इंटरनली, दैट इज इनपुट डिवाइस. बट COM इज योर आउटपुट डिवाइस. COM क्या होता है? अभी हम लोग फोन डिजिटल कैमरा में फोटो खींच लेते हो. बिफोर दैट आप एक डालते थे, क्या उसको क्या बोला जाता है? रील डालते थे. देन यू कैन क्लिक द इमेजेस और क्लिक द फोटोग्राफ्स. दैट वो जो रील को बोला जाता है माइक्रोफिल्म. तो माइक्रोफिल्म को क्या होता था? उसमें फोटो खींचते थे एंड देन आफ्टर उसको आपको लेके जाते थे फोटोशॉप को, वो उसको वॉश करके आपको फोटो निकाल के देता है. दैट इज ए माइक्रोफिल्म. माइक्रोफिल्म या आपको क्या मिलता है? हार्ड कॉपी एज द आउटपुट एज ए फोटो. तो .com is a computer output to microfilm, that is a output device. Magnetic discs are most popular medium for direct access, sequential access, both of the above, none of the above. Magnetic disc is popular for, that is a direct access. What is the meaning of direct access? Direct access किसको बोला जाएगा? What is the meaning of sequential access and what is the meaning of direct access? Suppose magnetic disc. Magnetic disc किसके अंदर आता है? उसमें क्या रहता है? Magnetic disc is a coating of iron oxide. कोटिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड. इसमें क्या कोटिंग रहता है? आयरन ऑक्साइड का कोटिंग रहता है. तो इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सेस. डायरेक्ट एक्सेस मतलब आप सीडी में एक कुछ फाइल रखे हो, फोटो रखे हो, उसको डालना है सीडी ड्राइव में. देन आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा. नंबर ऑफ पिक्चर्स विल बी देयर एंड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन क्लिक ऑन ए पर्टिकुलर पिक्चर एंड यू कैन सी दैट वन, और यू कैन take the copy or whatever it may be, you can print the copy, whatever it may be. तो मगर what is sequential access? Sequential access का मतलब होता है one after another, one after another, one after another. That is a sequential access. Example, हम लोग before that use करते थे मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक ड्रम उसको बोला जाता था. और उसको अभी क्या बोलते हैं ना? तुम लोग अभी किसके साथ उसको कंपेयर कर पाओगे? दैट इज योर रील और कैसेट रील के साथ आप उसको कंपेयर कर सकते हो. कैसेट रील क्या होता है? स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक, उसमें एक रिकॉर्डिंग मीडियम रहता है, उसमें हम लोग गाना स्टोर करते हैं. उसको जब रन करते हैं वन आफ्टर अनदर उसमें गाना रन होता है. ठीक है, तो दैट इज ए कैसेट और दैट इज नोन एज ऑडियो कैसेट. तो हम लोग बिफोर दैट यूज करते थे मैग्नेटिक टेप. मैग्नेटिक टेप इज, इसके साथ हम लोग कंपेयर कर पाएंगे मैग्नेटिक टेप को योर ऑडियो कैसेट के साथ. दैट इज a strip of plastic. In that plastic one recording medium will be there. In that medium you can store the song and whenever you can run one after another आपका song play होगा. That is a known as sequential access. मगर मैग्नेटिक डिस्क योर CD DVD उसमें क्या होता है? दैट इज और लेयर रहता है, दैट इज आयरन ऑक्साइड. उसमें क्या होता है? हम लोग CD ड्राइव को डायरेक्टली पुट करते हैं उसके ड्राइव में एंड नंबर ऑफ फाइल आ जाते हैं. अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी कैन यूज अ पर्टिकुलर फाइल. दैट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सेस. 137A. Which of the following produces best quality graphics? बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स. ग्राफिक्स का मतलब हम लोग फोटो के हिसाब में अच्छा क्वालिटी का इसमें प्रिंट हम लोग को मिलेगा. लेजर प्रिंटर. लेजर प्रिंटर में क्या होता है? लेजर बीम यूज होता है फॉर प्रिंटिंग.
इंकजेट प्रिंटर में ड्रिंक अभी क्या होते, क्या यूज करते हैं हम लोग, कैटरेज, मगर इंकजेट में मैग्नेटिक बॉटल, उसको ड्रम बोलते थे, उसमें इंक आज ए बॉटल रखा जाता है और टैंक रखा जाता है। फ्लटर इज योर, उसमें हम लोग क्या करते हैं, घर का बड़ा बड़ा ग्राफिक्स प्रिंट करते हैं, घर का बड़ा बड़ा पिक्चर हम लोग प्रिंट करते हैं। बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स हमको किसमें मिलेगा, दैट इज योर फ्लटर। डॉट मैट्रिक्स फ्लटर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है एग्जैक्टली लाइक योर फोटोकॉपियर। तो किसके साथ समान है, फोटोकॉपियर के साथ समान है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स प्रोडक्शन और ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन, आंसर होगा क्या होगा, दैट इज आंसर इज फ्लटर। प्रिंटर बेसिकली इज ऑफ 3 टाइप्स। प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। Printer is 2 types, impact printer, non-impact printer. Impact मतलब with the force print होगा, non-impact मतलब without force। तो impact with the force के अंदर 2 टाइप के प्रिंटर आते हैं, कैरेक्टर एंड लाइन, एंड नॉन इम्पैक्ट के अंदर आपका पेज प्रिंटर आता है, एंड पेज प्रिंटर एंड ऑल्सो योर फ्लटर आता है। The answer is which of the following produces best quality graphics of the reproduction? Answer is Flutter. Software in a computer enhances the capabilities of the hardware machine, increase the speed of central processing unit, both the above, none of the above. Answer is both the above. सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर एनहांसेस द कैपेबिलिटी हार्डवेयर ऑफ द मशीन। सॉफ्टवेयर मतलब, इसका मतलब क्या बोला जाता है, दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है दैट विल कंट्रोल ऑल द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर डज नॉट वर्क। तो इसलिए दोनों चाहिए, आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। Arranging data in a logical sequence is known as sorting, classifying, reprocessing, summarizing. Arranging data in a logical sequence matlab it may be A to small a to z, capital A to z, that is known as sorting, or z to a, capital small 1 to 10, 10 to 1, that is a sorting. Abacus was the first electronic computer, mechanical computer, electronic calculator, mechanical calculator. Answer is mechanical calculator. First इस वक्त abacus निकला था, that is your mechanical calculator. Insulator and memory address are represented by, instruction and memory address are represented by option number B, that is your binary code. Character code, binary word, parity bit. Instruction of the memory address represented in the form of 0 and 1, that is binary code बोला जाता है. Which is used for manufacturing chip. Which is used for manufacturing chip. Bus, control unit, semiconductor, A and B. क्या use होता है? That is the semiconductor. Conductivity is lies between what? Insulator and conductor. तो हमारा यूज के लिए जो हमारा चिप बनाया गया है दैट इज अ सिलिकॉन मटेरियल. सिलिकॉन इज मेड ऑफ फ्रॉम किसे, सैंड. सिलिकॉन मेड फ्रॉम सैंड एंड चिप इज मैन्युफैक्चरिंग चिप. हमारा जो हम लोग चिप यूज करते हैं दैट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन. A register organized to allow to move left or right operation is called counter, loader, adder, shift register. Answer is shift register. A register organized to allow move left or right operation is called. जिस वक्त हम लोग कुछ ऑपरेशन करने देते हैं that operation will be performed by your shift register. From which generation operating system
ऑपरेटिंग सिस्टम OR डेवलप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप हुआ था? दैट इज योर फोर्थ जनरेशन. First operating system is your Windows operating system, that is 1975. 1975. First operating system introduced in Windows operating system, that is 1975. A computer consists of central processing unit, memory unit, input, output, all of the above. Answer is all of the above. Answer is all of the above. Computer consists of, that is central processing unit, CPU, memory, input device, output device, that means all of the above. Whereas a computer mouse moves over a table surface, a trackball is stationary, difficult to move, drag, moved in a small step. मतलब क्या है? देखो, हमारा जो कंप्यूटर का माउस होता है, विद द हेल्प ऑफ हैंड और विद द हेल्प ऑफ पाम उसको हम मूव करते हैं, बट इन प्लेस ऑफ माउस हम लोग यूज करेंगे, दैट नेम इज ट्रैकबॉल. दैट इज ए स्मॉलर देन योर माउस एंड दैट इज ए स्टेशनरी. उसके ऊपर एक बॉल रहेगा. with the help of finger we can move the cursor on the screen with the help of that ball. So that is stationary, difficult to move, or dragged, moved in a small steps. Answer is 147. That is A. क्योंकि ये जो हमारा जो माउस होता है उसको विद द हेल्प ऑफ पाम उसको हम मूव करते हैं, बट दैट इज अ ट्रैकबॉल स्मॉलर देन योर माउस. उसके ऊपर आपका रहता है एक बॉल. माउस को मूव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ फिंगर इज यूज्ड एज ए इनपुट डिवाइस. इसमें इनपुट यूज होता है एज ए फिंगर. विद द हेल्प ऑफ फिंगर हम लोग क्या करते हैं, वो बॉल को जब मूव करते हैं वो कर्सर में स्क्रीन मूव होता है. दैट मीन्स जो डिवाइस हमारा ट्रैक बॉल है दैट इज स्टेशनरी ऑन द टेबल. दैट्स व्हाई आंसर इज स्टेशनरी. A byte is equal to 1 byte is equal to 8 bit. 0 and 1 individual is 1 bit. 0 and 1 is individual 1 bit. 8 bit जब मिलते हैं 0 0 1 1 0 0 1 1. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 bit individual. 0 is 1 bit. 1 is 1 bit. 8 बिट जब मिलते हैं दैट इज 1 बाइट. और एक क्वेश्चन आता है हाफ बाइट मतलब 4 बिट. 4 बिट को बोलते हैं 1 निबल. 4 बिट को बोलते हैं 1 निबल. तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स. If you are going to cite, you use often, instead of having 2 type in the address every time, you should save it as a file, make copy of it, bookmark it और delete it. आपको बार बार एक को यूज करना है तो आपको क्या करेंगे, आप उसको क्या देंगे, बुक मार्क देंगे, जो कि बार बार उसको नहीं ढूंढ के सेम चीज को बार बार नहीं ढूंढ के उसको जब हम लोग बुक मार्क दे देंगे वो सेम साइट आ जाएंगे. इजीली वी कैन सर्च और कर पाएंगे पर्टिकुलर साइट. दैट इज अ बुक मार्क. Housing all hardware, software, storage, and processing in one site location is known as type sharing. Distributed system, centralized processing, a host computer. Answer is your centralized processing. एक सारे आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज इन सिंगल लोकेशन में रखना है, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग. एंड व्हाट इज टाइम शेयरिंग? टाइम शेयरिंग का मतलब है, ऑलरेडी मैंने समझाया था आपको, mainframe computer as a server. We can connect number of computers, computer 1, computer 2, as a 1000 number of computers will be there.
तो यूजर वन, एक इसमें एक सीपीयू लगा है, एक मेमोरी है, दैट मेमोरी एंड सीपीयू यूज्ड बाय ऑल द कंप्यूटर्स। तो जिस वक्त काम करेगा यूजर वन, दिस वन इज यूजर वन, यूजर टू, यूजर 100। यूजर वन सोचेगा टोटल कंप्यूटर के ऊपर मैं ही काम कर रहा हूँ, दैट मीन्स सीपीयू एंड मेमोरी को मैं ही यूज कर रहा हूँ। 2 नंबर यूजर सोचेगा मैं ही अकेला यूजर हूँ। 3 नंबर यूजर सोचेगा मैं ही अकेला काम कर रहा हूँ और कोई नहीं कर रहा है। 1000 यूजर भी सोचेगा वही अकेला है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। टाइम शेयरिंग मोड में वो सबको कुछ कुछ टाइम शेयर करता है। सारे कंप्यूटर्स और सारे यूजर्स सेम सीपीयू एंड मेमोरी को यूज करते हैं, बट दैट इज इन अ टाइम शेयरिंग मोड। तो टाइम शेयरिंग कंसेप्ट कब आएगा? जिस वक्त नंबर ऑफ यूजर्स रहेंगे, टाइम शेयरिंग कंसेप्ट विल बी कम। मल्टी यूजर टाइम शेयर होता है मतलब मल्टी नंबर ऑफ यूजर्स आर देयर। क्लियर? ठीक है, आपको जब किसी को कुछ डाउट होगा आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट मैं आपका कमेंट्स देख के जब आपका किसी का कुछ डाउट रहेंगे आई विल क्लियर। ओके, एंड फाइनली मैं क्या बोल रही हूँ, मैं थी, हमारा इंस्टीट्यूट का नेम होता है क्वेस्ट। आई एम डायरेक्टर ऑफ द क्वेस्ट and we are providing banking, SSC, railway, OSSC, all types of coaching, as well as we are providing interview classes also. And thing is that इसमें जो आपको मैंने क्वेश्चन आपको समझाया 25 number of questions, that is 125 up to 150 question number from 125 to and question number up to 150। इसमें जो भी क्वेश्चन थे फ्रॉम माई मटेरियल और दैट इज आवर क्वेस्ट मटेरियल, सारे क्वेश्चंस हमारे मटेरियल से आए हैं। एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चंस है डायरेक्टली हमारे मटेरियल से ही आया है। तो आप जब जाते हो, आपको अच्छा करना है, कोई भी सेक्टर में आपको जाना है, बैंकिंग करना है, एसएससी करना है, रेलवे करना है, आप इजीली बिना झिझक के आप क्वेस्ट को आ सकते हो। और हमारा डेमो भी अभी चल रहा है, नया सेशन का क्लासेस भी अभी स्टार्ट हो रहे हैं। वी आर गिविंग आल्सो डेमो, वी आर आल्सो टेकिंग केयर ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच एंड स्टूडेंट का हम लोग टेक केयर करते हैं। आप आइए, कब डेमो लीजिए, आपको जब अच्छा लगे इमीडिएटली यू कैन ज्वाइन द क्वेस्ट। ओके, हैव ए गुड नाइट, थैंक यू।